Hi, good evening, everybody. How are you all? I hope you people are doing great, and welcome to yet another YouTube session with Sonia Luthra. And you already know me, I am an expert trainer for IELTS on Unacademy platform. So today's session is going to be about the podcasts. Yes, you have heard absolutely correct. Today I am going to talk about like 5 best podcasts that can basically help you prepare for your IELTS exam. Not only these podcasts are going to help you in your listening exam, but they are also going to help you prepare for vocabulary for your writing as well as speaking module. So a lot of you think that podcasts are used only to help to boost your listening. Podcasts are equally going to help you boost your vocabulary for your speaking as well as writing part. So let's quickly get started with today's topic. So before I move on to what podcast will help you, I would like to talk about few things about what a podcast is, how exactly these podcasts are going to help you in your listening or speaking or writing module. Sumit, I really don't know what sound disturbance is that. Could you please elaborate it a little bit, because I am sitting right now in my studio with the, obviously there's no AC on. There's just the light and my laptop. That's it. If you could help me elaborate what kind of sound you can hear, then definitely I would like to, see. Hi Deep, welcome to the session and good evening everyone. So okay. Maybe it's my laptop's fan. It could be my laptop's fan, because the laptop is quite, like, definitely it's on since morning and it might be like generating a lot of heat. So it's the fan, nothing else. Anyways, coming back to the actual topic, we were discussing, like I was telling you that before I jump on to that, which podcasts are the ones that you should I'll be recommending you to start preparing your IELTS from. I would like to talk about what podcasts are. Secondly, how exactly these podcasts are going to help you prepare for your listening exam, because definitely you're not going to get questions just like you get some IELTS preparatory, or I would say practice question in your Cambridge books. In podcast, you're not going to get the exact exam level question, but that would help you boost your skills, or I would say enhance your skills in such a manner that those enhanced skills are going to help you get you a better band score. Okay. So coming to the actual topic, that what podcasts are. Podcasts are basically some radio shows that you can listen to on your mobile phones. These are not actual radio shows, because radio shows are done on radios, but it is a kind of radio show which you can actually listen to on your mobile phone, right? So yeah, पॉडकास्ट बहुत ही छोटे हो सकता है, पॉडकास्ट 3 मिनट्स के हो सकता है पॉडकास्ट 10 मिनट्स के हो सकता है पॉडकास्ट जो है वो 20 मिनट्स और 1 आवर के हो. ठीक है, डिपेंड अपॉन व्हाट काइंड ऑफ पॉडकास्ट यू पीपल आर इंटरेस्टेड इन लिसनिंग. कई बार हम ऐसा होता है दैट वी आर ट्रैवलिंग in a bus or maybe in a car while we are like going to our office or coming back from the office. All you have to do is like वो 3 minutes का पॉडकास्ट आपने प्लग इन किया और आपने उसे सुना, and you might gain a lot of vocabulary out of it, right? So yeah, now when you already know that what a podcast is,
I'm going to talk about how to find the podcast, how to use podcast, and of course top 5 to 10 podcasts that I want to recommend you for your IELTS preparation, right? So first, answering the first question, that how to find the podcast. If you are an Apple user, there is an app called as there is an app जिसका नाम ही podcast है, ठीक है? There is an app जिसका नाम ही podcast है. अगर आप iOS यूजर हैं, if you are an Apple user, all you have to do is आप अपने Apple Store पे जाइए, podcasts नाम से सर्च करिए, you will get that particular application, ठीक है? And if you are an Android user, there is an app called as Stitcher. आपको Android के Play Store पे जाना पड़ेगा, and the spelling is written right in front of you on the screen. So आप उस जो है Stitcher app को डाउनलोड करिए, and मैंने steps भी mention करे हैं. Open the app, type the podcast you are looking for it, like in both. Once you have downloaded the podcast app or the Stitcher app, all you have to do is just open the app and type the name of the podcast if you are like whatever you're looking for. If you know the exact name, and if you don't know the exact name, maybe you can type some keywords like English learning, IELTS learning. There might be some podcasts which might pop up. So once you have typed the keyword or the exact name of the podcast, click on the tile look like for all the episodes and play. You know, there are certain podcasts which have a countless episodes, तो आप वो episode 1 by 1 जो है वो सुन सकते हैं. The last part, you can also subscribe to catch the newest podcast. Let's say if you liked one of those podcasts and you want to listen to it on the frequent basis, you can just subscribe to the podcast just like you subscribe a YouTube channel, so that you do not miss out on any new episode that might come in the future, right? So that's the way you can find the podcast and you can use the app. I hope there's no rocket science in downloading a simple app and using it, because you people are, I know, tech gods. Now the second question, that how exactly these podcasts are going to help you in boosting your listening score, the one, and help you gain some vocabulary. So the first point, when you basically listen to podcast, it helps you build your listening stamina, and it also helps your concentration power and helps you concentrate on one thing without distraction. Generally, a lot of trainers or a lot of educators will suggest you to go on Netflix or Amazon Prime and start watching some web series, but the problem is definitely watching Netflix or a web series also helps you boost your vocabulary and your listening ability. However, most of us would like to sit in our bed, or maybe with blankets on and popcorn and maybe some tea, coffee, cold drinks in our hands, and then we start watching or binge watch Netflix. हम लोग जो हैं जब नेटफ्लिक्स देखना स्टार्ट करते हैं, या फिर जो भी सीरीज आपके XYZ ट्रेनर ने आपको सजेस्ट की है, जब हम उसे देखना स्टार्ट करते हैं, व्हाट डू वी डू? हम बहुत ही आराम से अपने बेड में काउच पे लेटते हैं, फोन हाथ में होता है या लैपटॉप हाथ में होता है या टीवी ऑन करते हैं, we'll be munching on some snacks, and that is how we watch it, right? So that is not going to help you. That is not going to lead you to anywhere. All you are doing is you are entertaining yourself. You're not training your mind for an exam. When you listen to a podcast, it's highly recommended, at least from my side, that when you are listening to a podcast, or for that matter, if you are watching a website, for your examination purpose, you make sure that you sit where you generally study, right? अब जहाँ पढ़ते हो, हर एक का एक space होता है, एक study space होता है. Like I have my studio wherein I sit, I work, right? I can't
feel the same way when I am in my bedroom, right? Because in my bedroom, I feel cozy, right? I can't feel, I'm not in that zone, I'm not that in mood, I'm not in that mindset wherein I want to learn. Correct? Yes, Spotify is amazing, Deep, no matter what. But मैं उसके अलावा भी कुछ देखो, Spotify is good for everything. But then there are some other, podcasts which will help you specifically for your IELTS preparation. So I'm going to talk about those podcasts as well. So थोड़ा सा wait करो, hold your horses a little bit. I'm going to come to that, right? So जैसे कि मैं बात कर रही थी, I was talking about the zone and the mindset, right? Okay, Sumit, definitely I'll do that. अभी पहले जो है टॉपिक पे फोकस करते हैं, राइट? सो मैं ये बात कर रही थी कि लेट्स से इफ आई एम इन माय स्टूडियो, डेफिनेटली आई एम इन अ वर्क जोन, आई एम इन अ माइंडसेट वेयरइन आई वांट टू वर्क, बट इफ आई एम इन माय बेडरूम, आई डोंट वांट टू वर्क, माय माइंड डजंट फील लाइक वर्किंग, राइट? सो whenever you are listening to a podcast, or for that matter if you're watching a web series or like any kind of web series suggested by your trainer, please make sure that you sit in a place or a zone wherein you feel like studying. आप उसको एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, एज अ स्टडी पर्पस से देख रहे हैं, तो मेक श्योर आप उसे स्टडी पर्पस के लिए ही देखें. और सेकेंड थिंग, क्योंकि हम यहाँ वेब सीरीज के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, सिंस वी आर ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट द पॉडकास्ट, सो एज आई टोल्ड यू, द पॉडकास्ट विल समवेयर हेल्प यू व्हेन यू हैव योर ईयर प्लग्स on, because you're not visually attracted to something, all you are doing is listening. So make sure that you have a notebook and a pen or a pencil handy with you, so you can do a lot of things. You can be creative when it comes to the podcast. The first thing first you can do is, like, let's say if there is a 3-minute podcast, give yourself a task that I'm going to listen to the entire podcast, and once it's done, I'm going to summarize it all on my own. The second step, focus on the overall meaning, right? Listen, summarize, listen again and check, which means once I have once I've listened to the entire 3 minutes of podcast, I'll stop it. I will kind of summarize it, or maybe I can write the summary of it. I will listen to it once again, and while I'm listening, I'll check whether whatever the summary I have written, is it even matching with what I have heard? Okay, so आपको क्या करना था, आपने सुना पहले जो है, आपने लिसनिंग पूरा जो अपना है पॉडकास्ट 3 मिनट का सुना, उसको समराइज किया. टेक योर टाइम फॉर लाइक मे बी 3 मिनट्स 4 मिनट्स, राइट व्हाट यू हैव हर्ड, जितना भी आपको मेमोराइज हुआ है, जितना आप रिकॉल कर पा रहे हो. लिसन टू द पॉडकास्ट वंस अगेन एंड चेक कि आप कितना उसका ओवरऑल मीनिंग जो है वो समझ पाए हैं. दैट वेज इट इज गोइंग टू फर्स्ट इंक्रीज योर लिसनिंग एबिलिटी, आपका स्टेमिना बढ़ाएगा, क्योंकि अब आप पॉपकॉर्न लेके, कोल्ड ड्रिंक लेके एक कोजी जोन में बैठ के नहीं देख रहे हो. आपका योर माइंड, योर आईज, योर हैंड्स, एवरीथिंग इज वर्किंग साइमल्टेनियसली. जब मैं कल आई थिंक रीडिंग का प्रॉपर कोर्स आप लोग को करा रही थी, तब भी मैंने बोला था लिसनिंग इन्वॉल्व्स मल्टीटास्किंग, राइट? डिडंट आई टॉक अबाउट दैट? सो जब आप पॉडकास्ट भी सुन रहे हो, तो आपको उस मल्टीटास्किंग जोन में आना पड़ेगा इफ यू वांट दोस पॉडकास्ट टू हेल्प यू प्रिपेयर फॉर योर एग्जाम. आई होप आई एम लाइक क्लियर इनफ. तो पहली तो चीज, जब आप सुन रहे हो, आप कंटिन्यूसली, पहली बात तो देखो क्या होता है, सिंस वी आर सो बिजी इन आवर ओन वर्ल्ड, हमारा जॉब है, हमारा फैमिली है, हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, तो उनके साथ हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिलती है कि हम पूरा टाइम इंग्लिश सुने या बोले, ठीक है. So when you listen to a podcast, basically you are getting yourself into a habit of listening the language for which you are going to take exam on the regular basis. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि एग्जाम में फर्स्ट टाइम आप 30 मिनट्स के लिए पहली बार ऐसा हो रहा है कि आप अंग्रेजी इतनी ज्यादा सुन रहे हो. समझ रहे हो बात को मेरी?
ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम वाले दिन फर्स्ट टाइम की आप फर्स्ट टाइम इतना सारा इंग्लिश का कंटेंट सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप वैसे ही पैनिक हो जाओगे, क्योंकि आदत नहीं है दिमाग को इतना सुनने की, है ना, इंग्लिश सुनने की इतनी आदत नहीं रहती है हमें. सो इट विल हेल्प यू build a habit of listening to the language, simultaneously understanding the language. और साथ ही साथ जब आप उसकी समरी लिख रहे हो तो जो आपने सुना उसको आप प्रोसेस भी कर पाओगे, धीरे धीरे अंडरस्टैंड कर पाओगे, उसका मीनिंग समझ पाओगे. आई एम नॉट सेइंग कि आप वर्ड टू वर्ड समझ जाओगे, बट एटलीस्ट ओवरऑल एक जीस्ट पता चल जाएगा, यस और नो. सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली योर पॉडकास्ट are going to help you build your listening stamina. फिर आप एग्जाम वाले दिन ना थकोगे नहीं, क्योंकि आप 3-3 मिनट का जो पॉडकास्ट है सुनकर अपने माइंड को इतना ट्रेन कर चुके हो. आप पहले 3 मिनट का सुनोगे, फिर आप 10 मिनट्स का सुनोगे, फिर you'll go for 15 minutes and somehow you can go to up to 1 hour of podcast. So your mind is already trained for something which you are expecting in your exam and it is not new. तो माइंड को कुछ एकदम से पैनिक अटैक नहीं आएगा, ठीक है. So that is how your like podcasts are going to train your mind to listen, concentrate as well as process. अब process भी कर पा रहा है धीरे धीरे mind, ठीक है. तो this way it is gonna help you in your listening. अब बात करते हैं ये vocabulary में आपको कैसे help करेगा. Definitely when you are listening something new, there are many podcasts. बहुत सारे ऐसे podcast होते हैं जो specifically कुछ topic पे हैं, ठीक है. जैसे मुझे हेल्थ के बारे में कुछ सुनना था. आई वॉन्टेड टू लिसन समथिंग अबाउट हेल्थ बिकॉज हेल्थ इज अ वेरी कॉमन टॉपिक दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन योर स्पीकिंग एज वेल एज इन योर राइटिंग, है ना. तो मैं चाहती थी मुझे हेल्थ से स्पेसिफिक कुछ टॉपिक मिले. आई एम लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट विच इज टॉकिंग अबाउट हेल्थ. आई माइट ग्रैब सम वोकैबुलरी फ्रॉम देयर, है ना. Yes, exactly, Deep. That's what I'm talking about here. कि आप जो है टॉपिक वाइज जो है अपने पॉडकास्ट निकाल सकते हैं, एंड उन टॉपिक वाइज जो पॉडकास्ट हैं आपके उसमें आप जो है डेफिनेटली वोकैबुलरी जो है ग्रैब कर सकते हैं अपने राइटिंग और स्पीकिंग के लिए. द मोमेंट यू हैव हर्ड अ वर्ड, अ न्यू वर्ड दैट यू डोंट नो द मीनिंग ऑफ, just write it down in your notebook. Once you are like done with listening to the entire podcast, go to the dictionary, refer back Google, उस वर्ड का मीनिंग निकालिए, उसका सेंटेंस यूजेज देखिए, उसके सिनोनिम्स देखिए, एंड काइंड ऑफ जो मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अपनी वोकैब डायरी जो आप मेंटेन कर रहे हो, अगर मेरे कहने पे ऑलरेडी कर रहे हो तो उसमें आपका एक और वर्ड नया ऐड हो गया, है ना. सो एवरी टाइम व्हेन यू लिसन टू अ पॉडकास्ट, since you are already ready with a notebook and a pen or a pencil, note down the vocabulary words that you have heard for the very first time, unka meaning samajhiye and try to use them in your writing as well as in your speaking module. So that's how आप अपनी vocabulary भी with the help of podcast जो है increase कर सकते हैं. थर्ड जो आप कर सकते हो, it's a very fun activity. मैंने स्क्रीन पे देखो एक लिंक दिया है. With the help of this link, you can basically create. ये आपको रीडिंग में भी हेल्प कर देगा, ठीक है. If you can look at my screen, I have shared a link. इस लिंक की हेल्प से आप अपने खुद के fill in the blanks बना सकते हो. So आप क्या करिए, there are many podcasts जो आपको इनमें ट्रांसक्रिप्ट भी देती है. ट्रांसक्रिप्ट मतलब जो भी वो बोल रहे हैं उसको रिटन में देती है, ठीक है. तो आप उसकी ट्रांसक्रिप्ट को कॉपी कर लीजिए, ठीक है. Go to this website or the link that I've shared. ये कुछ क्लोज टेस्ट की तरह आपको ये जो दिख रहा है ना, इस तरीके का ऐसा दिखेगा. और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, लाइक एट द राइट हैंड साइड, इफ यू सी, इफ यू थिंक दैट इट विल हेल्प यू बूस्ट योर ग्रामर. बेसिकली अगर आपको लगता है कि आपके प्रेपोजिशंस जो हैं वो वीक हैं, तो आप वहां पे जाके प्रेपोजिशन सिलेक्ट करिए और एवरी एंड वर्ड्स मतलब एवरी फोर्थ वर्ड जो है, एवरी फोर्थ प्रेपोजिशन आपका ब्लैंक बन जाएगा, या एवरी सिक्स्थ प्रेपोजिशन आपका ब्लैंक बन जाएगा. So you can kind of make your own fill in the blank to boost your grammar also using the transcript of the podcast. ठीक है. तो आप यहाँ पे अपना एक खुद का fill in the blank जो है वो बना लीजिए listening में, या फिर reading के लिए अगर grammar boost करनी है while you are listening, try to fill that gaps, है ना.
लिसनिंग में भी हेल्प हो गया, और अगर सुनते हुए नहीं फिल करना है तो पढ़ के अपने ग्रामर नॉलेज के हिसाब से उसको फिल करके देख लीजिए. तो दोनों वेज, इट्स गोना हेल्प यू इन योर लिसनिंग ऑल्सो एंड इट्स गोना हेल्प यू बूस्ट योर ग्रामर ऑल्सो, अगर आप ये क्लोज टेस्ट वाला जो है ऐप यूज करते हैं या लिंक यूज करते हैं. ठीक है, सो दिस वाज द थर्ड वे दैट पॉडकास्ट कैन हेल्प यू. नाउ आई एम गोना मूव ऑन टू द एक्चुअल पार्ट wherein I would like to recommend few podcasts to you. ठीक है, Spotify तो देखो सबको ही पता है. Apart from that, definitely ये जो है ना, it will help you get used to hearing real English listening test is. See, एक और बात जो है ना यहाँ पे जो मैं बात करना चाहूंगी, that is very very important. Your real English जो आपका जो टेस्ट आता है वो एकदम टेक्स्ट बुक इंग्लिश भी नहीं होती है और ना ही वो होती है जो हम डेली बेसिस पे बात करते हैं. इट इज समवेयर मीडियोकर लेवल की होती है. ठीक है, तो जो एक्चुअल में आपके एग्जाम में जिस तरीके की इंग्लिश बोली जाएगी ना, आप पॉडकास्ट की हेल्प से वो लैंग्वेज यूज टू हो जाओगे सुनने के. गुड पार्ट अबाउट पॉडकास्ट आर यू कैन एडजस्ट द स्पीड ऑल्सो. अगर आपको कहीं लग रहा है कि कभी एक्सेंट, आप एक तो डिफरेंट डिफरेंट एक्सेंट से यूज टू हो जाओगे, एक्सेंट्स यूज टू हो जाओगे, स्पीड आप बढ़ा कम सकते हो, तो वहां पे भी आप अपना जो है कंट्रोल आपके हाथ में. इफ यू वांट टू प्रैक्टिस ऑन हाई स्पीड, आप वो भी कर सकते हो. एलआर की मैंने ऑलरेडी बात कर दी है, दैट इट हेल्प्स यू बिल्ड योर एलआर. ठीक है, आइडियाज मिल सकते हैं अगर आप टॉपिक वाइज जो है पढ़ रहे हो, लेट्स से पॉडकास्ट सुन रहे हो, तो वहां पे आपको हेल्प, जैसे मैंने बोला, तो आपको अपने राइटिंग और स्पीकिंग के लिए कुछ आइडियाज मिल गए वोकैबुलरी के अलावा. एंड डेफिनेटली आप जो एंजॉय करते हो, इफ यू एंजॉय कॉमेडी, इफ यू एंजॉय एजुकेशनल, आपके पास हर तरीके के पॉडकास्ट हैं. तो अगर आपको कुछ कॉमेडी सुनना है, कुछ रोमांटिक सुनना है, ठीक है, गो फॉर इट, बट मेक श्योर कोजी होके नहीं सुनना है. ठीक है, अपने स्टडी प्लेस पे बैठ के सुनना है. Deep, I don't know why it is happening, but I am like sitting in a room wherein nobody is there. कैन यू दीप प्लीज हेल्प मी आउट विद किस तरीके की आवाज आ रही है आपको. मैंने पहले भी सुमित से भी यही रिक्वेस्ट की थी कि मुझे बता दो, शायद मैं फिगर आउट कर पाऊं कि क्या साउंड आ रहा है. बिकॉज आई एम सिटिंग इन अ रूम वेर इन नोबडी इज हियर. आई एम सिटिंग अलोन इन द रूम. ऑल आई हैव हियर इज वन लैपटॉप, कैमरा एंड माई फोन, दैट्स इट. किसी डिवाइस की आवाज आ रही है, किसी पर्सन की आवाज आ रही है. आप मुझे एक चीज ये बात बता दोगे ना, तो मैं नेक्स्ट टाइम से शायद से फिगर आउट कर पाऊंगी कि आवाज किस चीज से आ रही है, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई वाईटी सेशन लूं तो वो प्रॉब्लम फिक्स हो जाए. सो हियर वी हैव some podcast with transcripts. The very first podcast that I would like to recommend is All in Mind. कर जैसा. ओके, आई ट्राई टू फिगर इट आउट. कारण मैं फिगर आउट करने की कोशिश करती हूँ नेक्स्ट यूट्यूब से पहले कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है. बट आज जो है प्लीज बेयर विद मी, एंड फ्रॉम नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स मैं देखती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, किस चीज का साउंड आ रहा है. Anyways, coming to the podcast that I wanted to recommend to you people are like, first, it's All in Mind. Second, Health Report. Third, Stuff You Should Know. It's American. Fourth is 6-Minute English. Like 6-Minute English is an amazing podcast. Of course, TED Talks. I can't forget TED Talks. Spotify आप सब लोग को पता ही है. Like ये जो 5 थे, ये थे with transcripts. Remaining 5 are without transcripts. Costing the Earth, Digital Planet, Big Ideas, Future Sense, and you can also refer to E2 Talks. ठीक है. सो अगर आप चाहो तो इनको नोट डाउन कर सकते हो. मे बी एट द लेटर ऑन यू कैन टेक अ पिक्चर ऑफ दीज पॉडकास्ट. मैंने 5 बता दिए विद ट्रांसक्रिप्ट्स, 5 मैंने बता दिए हैं विदाउट ट्रांसक्रिप्ट्स. सो या दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन.
Yes, exactly Karan. ये 6 minute जो है, as I already mentioned कि 6 minute English is an amazing podcast. TED Talks is amazing. E2 Talks is amazing. ठीक है. And Spotify पे तो आप ढूंढ ही सकते हो. So yes, these are few like my favorite podcasts that I have shared with you, and those podcasts are definitely going to help you boost your score. ठीक है. Not only it will help you boost your score, but in general life also, since you people are going to study or live in a country wherein everyone speaks this language, you people have to upgrade yourself when it comes to the language skills, right? तो सिर्फ इसको एग्जाम पर्पज से मत सुनो, इसको एक लाइफ स्किल की तरह पॉलिश करो. ठीक है. सो दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से. Apart from that, the people who are new to the channel and do not know about Unacademy, Unacademy is one of the largest online platform which helps you prepare for various exams, like for competitive exams, including definitely IELTS. And we, like, if you are somebody new, we do have an app called as Unacademy Learner app, and we do have this website. If you are looking for such amazing content and classes, all you have to do is just download this Unacademy Learners app and log in. And of course you should choose IELTS as your goal if you are preparing for IELTS exam, right? Once you download this app or log into the website, go to IELTS goal and look for the special classes. Like, these special classes are absolutely free of cost. There is another category of the classes which is called as plus classes. These are the paid classes. We have 1 hour of class every module, Monday to Friday. Like, some classes are also scheduled for Saturday and Sunday, but usually we have Monday to Friday classes for every module. So basically 4 hours of classes every day, Monday to Friday, 1 hour dedicated to each module. And there are like other trainers apart from me who will be helping you out with the modules, right? So yesterday only we started with a new batch in which I am taking care of your speaking as well as listening module. Swayam Prabha ma'am is taking care of your writing module. She takes her classes 11 in the morning and I take my class at 7:30 p.m. We are gonna do like speaking and listening alternative days, and Garima ma'am is basically taking care of your reading module at 8:45 in the night. If you want to be part of this particular course, definitely you will have to go ahead and buy the paid subscription. We do have two different type of paid subscriptions. One is a plus subscription, another one is an iconic subscription. So the difference between plus and iconic subscription is that in plus you'll be able to attend all the structurized classes per module. In iconic there are like 2 to 3 extra things. The first thing that you get a one-on-one mentorship. You get a one-on-one mentorship wherein that one-on-one mentorship can be used for your writing as well as speaking evaluation or for any kind of doubt clearing sessions. Apart from these one-on-one mentorship in iconic, you do get some study material directly sent to you by Cambridge. Cambridge आपका जो है definitely it's the only sole body which basically prepares your IELTS exam, and definitely the same body is going to send you some study material which Cambridge wants you to go through before their exam. So definitely it is something that you should consider, right? So definitely there will be a difference in the plus and iconic, and we do have 1 month and 2 months of courses. So you can join 1 month of course if you are somebody who's going to take exam in a month's time, or if you have already booked your exam but self-doubting whether you will be able to clear your exam or not, क्योंकि आपने already 15,000 पे कर दिया almost. तो जो हमारा 1 month का कोर्स है that is for 999 rupees. अगर आप इसमें ये अमाउंट ऐड कर दो, it will at least give you a kick off boost, right? अभी जो सेल्फ डाउट हो रहा है, अगर 999 rupees देके you can
फील कॉन्फिडेंट इनफ फॉर योर एग्जाम, प्लीज गो अहेड। इसके ऊपर भी आपको देखो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ये जो प्राइस है। तो इट वुड कॉस्ट यू समथिंग अराउंड 899 ओनली। अगर मैं 3 मंथ्स की बात करूं तो 3 मंथ्स इज गोना कॉस्ट यू 2499 एंड 3 मंथ्स कोर्सेज फॉर somebody who is gonna take like 1 or 2 good months to prepare for the exam, and अभी उनको थोड़ा टाइम है and they are the beginners, ठीक है, ये उसके लिए है। अगर मैं आइकॉनिक की बात करूं तो जो आइकॉनिक के जो प्राइजेस हैं हमारे, 1 मंथ का जो प्राइस है आइकॉनिक का वो 2999 है, एंड अगर मैं 3 मंथ्स की बात करूं तो इट्स बेसिकली 3999, एंड उस पे भी आप सबको ये जितना भी मैंने जो भी अमाउंट बताया है इन सब पे one month is 999, this is for 249, like sorry 24999. 1 month iconic is for 2999 and 3 months iconic is for 3999, right? इन सब पे आप लोगों को जो है you can avail a 10% discount on all the prices said above if you use my code which is Sonia10। अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो definitely you can get a 10% discount on it। ये मेरा रेफरल कोड है for 10% discount। So yeah, that was all for today's session. Thank you, and definitely consider subscribing the channel if you are new to the channel, and do not forget to press the bell icon so that you do not miss out on any new video from the channel. And of course you should like the video if you liked it, and of course share it with your friends. So I'm gonna see you until the next session.